पहली बार मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ये कह रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगी। वैसे हर रिश्ते की रिलेशनशिप की शुरुआत में यही होता है, लेकिन वो बाद में क्या होता है वो तो बात की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैगी बनाना आता नहीं है, लेकिन उनका आत्मविश्वास देखिए। जी हाँ, इसको कहते हैं कि अपने काम से कभी जीना चुराना। ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 171 AM। मैं स्वप्निल एंड शुरुआत हो चुकी है हमारे इस वीकेंड स्पेशल शो की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हमें ज्वाइन करेंगी ट्रैपिड गैरियल फ्रॉम लंदन, और इन्होंने बॉलीवुड में अच्छा खासा डेब्यू किया हुआ है। और इनका कल ही एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, कमली उसका नाम है। और साथ ही साथ एक चीज़ और, इनके लिए कितना डिफरेंट था, इनकी जर्नी कितनी डिफरेंट थी, क्योंकि एक ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट के साथ बॉलीवुड में हिंदी गाने गाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इनके लिए कितना इंटरेस्टिंग रहा, कितना डिफ़िकल्ट रहा, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और दूसरी बात आपके लिए ये है कि इनसे ना कुछ फ़नी चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। जी हाँ, तो आप सुनते जाइए रेडियो ब्रिस्वानी 171 AM। और ट्रैपिड हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और इसके बाद जो है, अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है या फिर आप कुछ बताना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो 31668895। हाँ जी, आइए। Firstly, congratulations for your new song. Thank you so much. That's very much appreciated. Yeah, sure. And once again, you're most welcome in Radio Briswani. Thank you so much. I must say it's really amazing to have the support of all your listeners and yourself as well for having me on the show. I think this is the second or third time now, so I feel like I'm part of the family. Yeah. And so how's your feeling? You are on Radio Briswani second time for Kamli promotion. So how's you feeling? I've got a mix of emotions at the moment. I'm stressed, I'm excited, I'm nervous, I'm happy, I'm in love, I'm stressed. With my team are on the receiving end. I'm like, we've got another 24 hours to go. Just please, just make it a hit. And bless my team because they're doing whatever they can. But I think they're used to it by now. So, but from my listeners and my fans, I've been having such an overwhelming response. And Z Music have been really, they really pushed it out on the TV channel and a few radio stations, and it's becoming, it's got a lot of good feedback. Yeah. It's just really, really overwhelming as well. So, yeah, listeners is very liking your song. Yeah, I think it's, for me, I've been working on Kamli for such a long time now. And I woke up this morning and I felt like a bit lost. I felt because it was so exciting to work on the recording, the video, and getting prepared for the release. And now it's out. I said to my team, okay, what next? अच्छा, इनकी लाइफ की जर्नी जो है ना वो काफ़ी मिस्ट्री है। एक तो जो लंदन की इंग्लिश का एक्सेंट, ऊपर से बॉलीवुड में सॉन्ग्स गाना, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। जी हाँ, आगे बहुत सारी बातें जानेंगे। आप सुनते रहिए वीकेंड स्पेशल शो विद मी आरजे स्वप्निल। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन रेडियो ब्रिस्वानी। मैं स्वप्निल और आज हमारे साथ हैं ट्रैपिड। तो आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। वैसे डेली तो हम अपने ही बारे में और दुनिया के बारे में बताते रहते हैं। जी हाँ, आइए। Trapid, you are from London, so why are you interested in Bollywood? Otherwise, you have many more options like EDM, Hollywood, and much more. Yeah, well, actually, it's funny you should ask this question. I know a lot of people are always very interested to know the answer to this. I've been following Bollywood with my father from a very young age. My father was very much into the Bollywood movies. And he loved the movies. So when I was young, I'd sit there with him and watch the movies. But I was never really interested in the movies themselves. I never really cared about much. I mean, he's never paid attention, should I say, to the movies themselves. Only music you like. Only music you like. You know, it's funny because I used to sit there and watch the whole 3.5 hour movies with him,
Maine Pyar Kiya, and then there was a few other there's one with Nana Patekar. I've forgotten which one that was now. The film, but he'd always have, and then he'd watch one film about 100 times. So. And then, when you're watching it that many times, it just gets a bit boring but it's always the music. And in the music, it was always the melodies that I was attracted to. I don't know, it was just, I don't speak Hindi at home. And it was always the melodies and the music that I got very much attracted to. So when I started to get an interest in music and wanting to learn how to, the world of music, I automatically got drawn into the whole Bollywood industry side of things. And it's only because I've been listening to it from such a young age, and that's what I've been highly influenced, on. So I still listen to the West, like, for example, Mariah Carey, Alicia Keys. Some of these are my favourite singers. I listen to Arabic singers like Ahmed Diab. He's one of my favourite Arabic singers. And I don't understand Arabic, but I think for me, it's like the Bollywood singing. I don't understand Hindi in detail, but I like the melodies and the music. So my taste is quite universal, but I did get a little bit of pushback when I first started singing in Hindi because of the accent side of things. Yeah. And I did have a lot of people saying to me, look, your accent really isn't right for this. And I was at the stage where I thought, okay, I'll give up and I'll maybe just sing in English then. I tried an English song at the time, this is quite a few years ago now. I recorded it, the song was called Feel It, and I recorded the song. I was even at the stage where it was mixed, mastered, ready to, go and launch even, but I wasn't feeling it. Actually, although the song was called Feel It, but I wasn't feeling it inside, deep inside. And I said to some of my circle of friends that, look, this really isn't me, and I really want to do what I want to do, not what people think I should be doing. So I overcame that obstacle. I got in touch with, through a mutual friend, I actually got in touch with Asif Ali. And I've been really fortunate because Asif Ali has worked with some of the maestros like Rahat Fateh Ali Khan. He's worked with Asif Aslam, and he's done work with a few of the up-and-coming independents. A lot of the independents he does work with as well. But I'm very fortunate to have been in the same studio where Rahat has been, Asif Aslam, and I walked in that same studio and recorded with the same very man. I wake up now and I think to myself, like, now that you asked me the question as to, how did I get into the Bollywood coming from the West? And it's sometimes even I don't know how it happened or how I made it happen. But I think the key thing really is to follow your passion and to do what you want to do, because then you won't really have those regrets inside you. Yeah. And now I can look back and I can say I did what I wanted to do and I've done it. And now I'm thinking, what next? I'd love to do some playback and really get into the heart of Bollywood now. That's probably my next step. इतना सुनने के बाद हम तो यही कहेंगे कि हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ बॉलीवुड में आपका भी डेब्यू हो और हम जो है किसी मूवी में आपका भी सॉन्ग यहाँ पे अनाउंस करें। जी हाँ, आगे आप सुनते जाइए मेरे यानी आज स्वप्निल के साथ ओनली ऑन रेडियो प्रेसवानी पे वीकेंड स्पेशल शो। हाँ जी, हम आते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन रेडियो प्रेसवानी 171 है। मैं स्वप्निल और साथ ही साथ हमारे साथ हैं ट्रैपिड, जो कि अपनी इस म्यूजिकल जर्नी के बारे में बता रही हैं कि कैसे ये लंदन से बॉलीवुड में इनका इंटरेस्ट बढ़ा। तो आइए जानते हैं। हाँ जी, your last year's 2 songs was absolutely fantastic. First is Avija and Vopal, and now Kamli is full of fresh vibes. No doubt you are, no doubt you are base of these songs, but who's next person behind of these super hit songs and why? Did you say who's the person behind the super hit songs? Yeah. Well, there's Asati included in there as well, which you missed out, actually. Asati has been getting a lot more attention than Vopal, Avija, Kamli. I'm not sure it's early to say on Kamli yet, But I'd say the brainchild behind this
there's actually, the main person behind these hits is actually the producer and composer Atif Ali. Yeah. And that's who I've just spoken about. He's based in Dubai. And he's really. He's not been afraid to experiment with me, being a new artist. As you can see, from Arija to Satya to from Warfel to now Kamali's got a bit of Kavali portions in it as well. It's like he's very much into the whole experimental. इनके इन सारे सुपर हिट सॉन्ग्स के पीछे जो है इनके म्यूजिक कंपोजर आतिफ अली, उन्हीं का पूरा हाथ है। जी हाँ, तो आप सुनते जाइए रेडियो ब्रेस्वानी 171 AM विद मी आरजे स्वप्निल, और हम आते हैं। जी हाँ, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन रेडियो ब्रेस्वानी, और आज हमारे साथ हैं ट्रैपिट, और इनकी म्यूजिकल जर्नी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। लंदन में रहेगी, कैसे किसी का बॉलीवुड में इंटरेस्ट बढ़ सकता है ये इनसे समझो। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लाइक EDM, हाउस, चिल आउट, दुनिया भर की चीज़ें, ट्रांस, डब स्टेप, लेकिन फिर भी अगर किसी का बॉलीवुड में इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये है। हाँ जी, आइए जानते हैं। Trapit, your vocal cord and style of singing is so pure and smooth. So how maintain you your voice? Some exercise or some technical training? I'd say it's a bit of both, really. I mean, I've been taking training now for quite a few years. Some riyaz and practice. Yeah, to be honest, I think when I first started, I underestimated how much training and learning is involved from a theoretical point of view. I just thought singing would be like driving a car, you go for a few lessons. But I was young then, and then I really did not understand what was involved. And then once I met I've been very fortunate to work with some very highly renowned singers and vocal coaches themselves, from Pakistan to London. Wow. It's amazing. And so it's really a lot to do with the actual training and commitment and dedication, how much work you put in behind the scenes on taking care of your voice, And then there's always the kind of, you can't have cold drinks, you can't have ice, and you can't have sauces, but you get used to it after a while. So which instrument you have when you start your practice? Harmonium or keyboard? Actually, I started on the harmonium. Wow. And because my vocal coach. So your classical is so strong. Well, I'm still learning actually. Oh. I've got a long way I'm still a baby in this field, to be honest. I've still got a long way to go. Harmonium I started off with, and then I got myself a keyboard. And then now I'm more on the keyboard side of things than the harmonium. Wow. ये बातें जो है ना वो जारी रहेंगी। आप सुनते रहिए रेडियो ब्रेस्वानी 171 AM। हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। हाँ जी, स्वप्निल के साथ ओनली ऑन वीकेंड स्पेशल शो। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से इस तरह भड़का कि भड़कते भड़कते उसने एक शायरी छेड़ दी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नज़रों से बचाया करो, सिर्फ आंखों में काजल ही काफ़ी नहीं है, गले में नींबू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। मैं कहता हूँ इतनी दर्दनाक खतरनाक बेइज्जती भरी शायरी कोई किसको कहेगा भाई। जी हाँ, हम तो छोड़ने के बाद भी उम्मीद पे कायम रहते हैं, शायद लौट आएगी। जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन इन रेडियो ब्रेस्वानी। देखो, काम की जगह पे ये अय्याशी वाली बात नहीं करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ है ट्रैपिट, जो कि अपनी सॉन्ग की प्रमोशन के लिए यहाँ पे हैं, और अब ये बताएंगी कि आखिरकार ये किस तरह से अपनी वॉइस को मेंटेन करना और इंग्लिश से हिंदी की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री, उसमें इन्होंने किस तरह की चैलेंज फेस किए, आइए जानते हैं। हाँ जी, You are from London, so how much challenging for you in Bollywood music industry for practice and vocal and language combination? I think that the language, to be honest, was a really big, massive challenge at the start. Yeah, because your really accent massive. Is a British accent. Yeah, I mean, how does it come across when you hear it in Hindi, like in the singing? I really worked at it.
really, really hard. You know, when I said to my circle of people when I first started, you know, my friends and family, I said, look, I'm going to do this. I don't care what it takes, I'm going to do it. And I used to sit for 1 to 2 hours every day. Wow. Just learning, repeating the words in Hindi, and you know, trying to improve my accent. And I worked at it by just repeating phrases in Hindi, repeating them again and again and again and again. Okay. And then obviously when I'm rehearsing my songs, I have to do the same thing. So it's much more difficult with the songs because you're not just picking up the melody, the notes and the composition. When I'm recording in the studio, sometimes I just feel like packing it in. I say to Afif, please just let it go. But he is very strict on accent, very, very strict. Yeah. Pronunciation is a backbone of this song. Yeah, exactly. So that's one thing that I'm appreciative of, that, you know, I have someone to sense check. Sense check. So he's like a control point for me, you know, in the studio from all angles. The challenge with regards to, you know, getting into the whole Bollywood scene, I'm still trying to crack that one. I'm trying to still break the formula for that. Wow. But I think it's just a case of, you know, meeting the right people, getting through with the right network. And now with this launch of Z, it's opening up a lot of doors for me as well. So I'll be planning a trip out to India soon, and hopefully meeting a few of the producers out there as well. And it's just a case of moving onwards and upwards from this point, really. Wow. सही है भाई. अपने यहाँ से जब गांव से कोई मतलब विदेश जाता है तो उसके हाव भाव देखने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है. यहाँ पे फॉरेन से कोई जो है इंडिया आया है और इनसे काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को भी मिल रहा है भाई. जी हाँ. एंड लेकिन आप इनके जब सॉन्ग सुनेंगे ना तो आपको लगेगा यार मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये लंदन से हैं. जी हाँ, सुनाएंगे आपको इनके सारे सॉन्ग्स. आप सुनते जाओ रेडियो ब्रेस्वानी 1701 AM. हम आते हैं. जी हाँ. आइए अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए. लंदन से बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया और दुनिया भर के कारनामे किए. इतना हार्डवर्क किया, रिहर्सल किया और साथ ही साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, न जाने कहाँ कहाँ से म्यूज़िक सीखा. इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर होगी जिस दिन इनको लगा होगा ओह माय गॉड. जी हाँ, ऐसा. तो आइए जानते हैं इन्हीं से. ओनली ऑन रेडियो ब्रेस्वानी 1701 AM with me, RJ Swapnil. Oh. Rapid, have you any interesting story about your musical journey? Funny or horrible? Well, I mean, I'm not sure if I mentioned this one last time actually when I was on the show with you. But when I first, it's actually a funny story how I first got into singing. Because although I've always had an interest in music and I used to sing along to Raja Ko Rani Se Pyar Ho Gaya when I was just about 13, I think. And I used to play it back and listen to my voice and think, oh, that's horrible. But I used to play it, record it for fun, you know. So I've always had this interest in music, but I've never really had the opportunity to get into it into the training from a very young age. Yeah. Because I was into the studying and all of the usual, you know, boring stuff. And I remember I actually had a date with a boyfriend. Mm-hmm. So this guy, he was an aspiring, budding Bollywood actor, and he was based in London. Yeah. I mean, he was an aspiring actor. So when I realised I'm going to have a date with this guy, and I was just a normal girl, just working in a 9-to-5 job in London, in an office, and I was desperately racking my brain, thinking, what am I going to talk about with this guy on the date? I really remember this very, very, very clearly because this was in 2010, I believe, now, so 7 years ago. So now, and it was around about May, so just exactly around just this time kind of thing. And I went for the date, and I remember before I went for the date with him, I just researched, and I thought, okay, I'm going to go and learn how to sing. Wow. I didn't even have to think about it. I just thought, well, I'm going to go and learn how to sing. I'm going to book my lesson, and then I'm going to book a trainer, and I'm going to go for this date
with this hot guy. And when he asks me, so what are you into? I can tell him, oh, well, I'm into singing. So that was 7 years ago. Oh. I didn't know that 7 years later I'd be on the radio. And now what does he say when he's listening your song? Well, I mean, he's not my boyfriend anymore. We keep in touch. He's always supporting me, though, and he's... I don't actually think he knows this story that I've told you, to be honest. I think he probably thinks I was into it a long time before I met him. You know, I played it very cool and casual, obviously. So, yeah, no, he's always very supportive. And so, I mean, it's quite funny because I'd say it was a trigger. You know, I've always believed things are meant to happen for a reason. And, yeah, so... अरे अबे जी हाँ, सुन रहे हो आप इस टाइम पे रेडियो ब्रिस्वानी विद मी आज स्वप्निल वीकेंड स्पेशल शो पे हमारे साथ है ट्रैपेट। जी हाँ, जो कि अपनी सॉन्ग्स की प्रमोशन के लिए यहाँ पे हैं और इनके सॉन्ग्स मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी सुनिए ये गाना, हम आते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन रेडियो ब्रिस्वानी 171 AM। अच्छा, कोई तो बुक ऐसी मिलती जिस पे दिल लुटा देते, हर सब्जेक्ट ने दिमाग खाया, किसी एक को निपटा देते। अब सिलेबस देखकर ये सोचते हैं कि 1 महीना और होता तो शायद हम दुनिया हिला देते। जी हाँ, एग्ज़ाम सेशन जो हैं काफ़ी सारे लोगों के शुरू हो चुके हैं और कुछ लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने सेमेस्टर को, सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को, एजुकेशन को एंजॉय करो, क्योंकि ये हम आपको ये नहीं समझा सकते कि आपको कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें कभी हमारे पल्ले नहीं पड़ी। ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 171 AM हमारे साथ है ट्रैपेट। आइए इनकी कुछ बातें जो हैं वो सुनने लायक हैं अब। जी हाँ, आइए। Who is your inspiration in Bollywood industry? I love Shreya Ghoshal. Shreya Ghoshal, wow. Shreya Ghoshal is, I'd say, my ultimate favourite Bollywood singer. Oh, wow. And simply because it's the simplicity in her style of vocal, and the way she carries herself in the song, I can really relate to it, you know, compared to some of the other Bollywood playback singers. If there's only one singer I could turn on at any one point in time, it would be Shreya Ghoshal. Without her, I mean, Lata Mangeshkar, I've learned a lot from her. But in terms of, you know, my icon is definitely Shreya Ghoshal. Wow. So what's your planning for Bollywood music industry? Well, I wish it was that easy. Yeah, okay, so like I mentioned already, I'll be planning a trip to India, so hopefully I'll be getting to meet a few of the producers and have some meetings. I won't be able to obviously mention names at this stage, but I'm planning a trip for later on this year. I'm also hoping to shoot a music video as well in India itself. So I'm getting linked in with some of the video directors over there right now. Wow. Hoping to do something around that. And really it's just a case of, you know, the next song I know it's very early to talk about the next song now, but next song will be very, very, very different to Kumli, and that I'm hoping to, you know, once again do a bit of a launch in India as well for. So in terms of the Bollywood scene, I'd really love to try my luck now in the whole playback side of things. Yeah. And that's my next. Our well wishes is always dream. with you. Yeah, thank you so much. I really appreciate that. Thank you. Yeah. You're so kind. किसी चीज़ की शुरुआत जो है ना वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, और ये अगर एक बार हो जाए फिर अच्छा बुरा समझ में आने लगता है, और फिर उसको हमको कैसे सुधारना है ये हमें सोचना है। जी हाँ, शुरुआत सबसे डिफिकल्ट होती है, वो तो इन्होंने कर दी है, बाकी आगे अब देखो होता क्या है। एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। अगर आप भी कोई सॉन्ग सुनना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो 31668895 पे, हम आते हैं। हाँ जी। अच्छा, आजकल चेतावनी भी कैसी कैसी दी जा रही हैं। एक ने कहा, अगर आपको कोई अनजान पार्सल मिले तो उसे मत खोलें, उसमें मेरी फ़ोटो हो सकती है। अगर आपने उस फोटो को देखा तो हो सकता है कि आप मेरे दीवाने हो जाएं।
जी हाँ। अब बताओ इसमें चेतावनी, धमकी या फिर प्रपोजल क्या है, समझी में नहीं आ रहा। लिखने वाले को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे दो भांग की गोटी चबा के लिखा हो। ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM। वो वक्त आ चुका है जब हम इनके मुंह से गाने सुनेंगे और इसके बाद इनके वाले गाने सुनेंगे। ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM स्वप्निल के साथ। हाँ जी। एंड विच म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर यू वांट टू कोलैबोरेट विद देम? Singer, I think it would be Arijit Singh. Wow. To be honest. He's And a the legend only- of Bollywood. You know of what? 21st He's a century. legend. He is a legend, but you know what it is with him? It's just his casual style. Yeah. I love his singing. I love his singing anyway. Yeah. I feel like it's a bit too mellow for my liking. But his style, the way he carries himself, I would just love to just stand in a recording studio with him and just be like, having a bit of a laugh with him. Imagine. Yeah, so that would be amazing, to be honest. Wow. And last, can you sing two lines of first is Vopal and Avija and Kamli, which was released yesterday. Two separate lines. बिन तेरे जीना क्या है, कैसे तुझे बताऊं, तुझसे ये उलझा है, कहीं तन्हा रह न जाऊं. Avija? Yeah, sure. I've got to get back to Avija now quickly. छट गया मेरा यार क्यों, कहता सी जिंद जान तो रह गया फिर दिलदार क्यों, आजा तू आविजा छट गया मेरा यार क्यों, कहता सी जिंद जान तो रह गया फिर दिलदार क्यों, आजा तू आविजा. Now Kamli. दिल में बस गया, रूह में बस गया, सांसों में तू ही बस गया, आए ना कोई पाए ना मुझे, अब कोई दूसरा. Thank you so much. Okay. Bye. Thank you. Bye. मेरे हिसाब से ये वक्त है उन सॉन्ग्स को प्ले करने का जो कि इन्होंने लास्ट ईयर रिलीज किए थे और अभी हाल ही में कल रिलीज किया है. जी हाँ, तो आप सुनते जाओ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM. एंड ये सॉन्ग्स जो हैं ये तीनों जो हैं ये गाए हैं ट्रैपिट ने, और साथ ही साथ अभी इनकी स्टार्टिंग है और साथ ही साथ इतनी खूबसूरत सी आवाज़ में इन्होंने गाए हैं, ज़रूर आपके दिल को छुएंगे ये गाने. जी हाँ, तो एंजॉय कीजिए रेडियो ब्रिस्वानी भी तीनों सॉन्ग, वोपल, आविजा एंड कमली, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM. हम आते हैं. हाँ जी, अजी जाने का तो टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा. आज रिलीज़ हो चुकी है मुन्ना माइकल, और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस मूवी की प्रमोशन जो है बड़ी धमाकेदार हुई है भाई. निधि अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड टाइगर श्रॉफ स्टारर ये जो मूवी है, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. रोमांस, डांस, कॉमेडी, थ्रिलर एंड साथ ही साथ एक धोखा. जी हाँ, और ये धोखा हमने इसलिए कहा क्योंकि मूवी में दो लोगों के बीच एक लड़की है. जी हाँ, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा होता है. मतलब धोखा, सपने, ड्रीम्स, फलाना ढिगाना, दुनिया भर की चीज़ें. यार स्टोरी में ना बड़े फ्रेश सी जो है एक ट्विस्ट डाला गया है, और मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए. अगर आप इस वीकेंड पे कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी. एंड लोगों का प्यार अभी से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है. जी हाँ, एंड प्रमोशन इसकी हो ही चुकी है, एंड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर गौरव एंड रोशन, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM. एंड म्यूजिकल एल्बम वो भी काफ़ी सुपर डुपर हिट है, आप गाने सुन ही रहे हो, तो आप सुनते जाओ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM. ये दो गाने सुन के आइए, उसके बाद हम आपको बाय बोलते हैं. जी हाँ.
हाँ जी, देखो बुढ़िया बिस्तर समेट लो, देखो हमें इधर से अभी जाना है। जी हाँ, वापस से हम आपको ज्वाइन करेंगे क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में हमारे मज़े तो भैया यही गा बजा के हो जाते हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी इंजॉय करते रहिए रेडियो ब्रेस्वानी 107.1 AM एंड शाम को 10 बजे जो है, यानी कि रात को 10 बजे 10 PM to 12 AM वापस से मैं आपको ज्वाइन करूंगा ओनली ऑन रेडियो ब्रेस्वानी 107.1 AM बाय बैडली अननोन्स नॉन स्टॉप पार्टी स्टेशन। आप भी रिक्वेस्ट कर दो उस पे 31668895 पे एंड फेसबुक पेज है www.facebook.com/Radio Breswani एंड मेल आईडी है breswani171@gmail.com। जी हाँ, तो इन सारी चीज़ों को जो है आप भी इंजॉय करिए, हम भी इधर से निकलते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। जी हाँ, और मिलते हैं आपसे वापस। हाँ जी, बाकी थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड फीडबैक देने के लिए। जी हाँ, बाय।